Thank you, Gopal. Gopal, thank you. Yeah, photo session. Jeet cricketers. Yes. So please come. See this, sir. Abhishek, sir. And Nancy. Thank you. Cricketers in blue will be battling out in the finals of the TISWADI Cricket League. Requesting everyone to please rise, stand for the national anthem. सभी से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं राष्ट्रीय गीत के लिए. मागता सगळ्या लागी सगळ्यांनी उभं राहावशे. Please, childrens, no movement. Everyone stop. Stop, breakers. No movements. Bikers, please hold down. On the countdown of 10,
the captains. Thank you, Bandy. Thank you, Gopal. Bandy Gopal from Nagore, Rajasthan, the drummist. But the captains are here. To my right is Anand Devjika. To the left, very talented Tushar Narvekar. We have chief guest Siddesh Naik sir, who will be spinning the coin. Officials, Vaman Maker. Please update both the captains in the rules and regulation as they know, but still as a formality, we will be doing that. Vaman sir, please run as you make teams run to make it on time. One of the most disciplined umpire on the soil of Goa, it has to be Vaman Maker. After the successful United Patrikas tournament, a panel of official umpires led by Vaman Maker. Once again, Vaman Maker in a fantastic role with 3 official umpires for TISWADI Cricket League: Rajendra Dabolkar, Abhijit Talekar, and Vaman Maker. Siddesh sir, proprietor, Shri Deco's chief guest of the function, is going to spin the coin. Tushar is going to call. The coin is going to go for the final time. Tails, he says, and tails it is. Tushar, the toss, spin your way. What is your decision? You would like to bowl first. 7 overs of the match, 2 overs of the power play. Restricting Jeet cricketers as you find them tough. You have briefed your teammates not to do the errors what they have done in the previous matches. All are geared up for the big event. Have a good one. All the best, Tushar. Anand, you have been asked to bat first. 7 overs, at least 10 runs every over will be the score, around 70-75. It's good enough against McLaren or something more than that. We were trying to bat first in the toss. Tell me something about your batters. Who are the batters who can really rise up to the occasion and come up good in the final event? No, it is not depend on 1 or 2 batsmen. Our entire team is ready for the batting, and we are really looking forward. All the best for you as well. So spectators, the lead from right from the center of the ground is McLaren captain Tushar Narvekar won the toss and he decided to bowl first. All the best for the teams. Drummist, you can watch out from where you are. Please, sir. Gopal Banti.
over the power play. Once again, all the best for both the teams. Let us see who's going to be the champion of TISWADI Cricket League. Myself, Nadeem Ahmed, will be joined by Ashok Jinaik and Sagar Gosavi. And also joining us will be Shekhar Pillai. So, panel of 4 commentators and professional scorer Umesh Asgang, YouTubers TennisCricket.in, and the DJ is Pranav, who will be playing the music time and again. The drone is flying high, taking the aerial view of this fantastic match. After the United Patrikas, this is wonderful event which will be concluding today. The 3 days of live action, we started on 7th of January 2022. We'll finish today, that is the 9th of Jan 2022. Out of this 8 auction team, 2 teams made it to the finals is Jeet cricketers and Laren cricketers in the finals. But the officials are stepping in, launching themselves in to take the charge of the match. Waman Maikar and Rajendra Dabulkar. Big thank you to Abbas Rishte, who has made it here, giving his precious time. Muzaffar Qadri, CEO, Champion Computers and Mobiles, and sponsor Best Bowler and Best Batsman Mobile Phones. Nikhil Naikson, Senior Manager, Axis Bank, South Zone, has sponsored Best Fielder and Best Catcher of the tournament. Will be soon joining by Faisal, CEO of Ideal Digital Color Lab and Advertising Partners. Will be soon joined by ex-Deputy Mayor and current corporator CCP Panjim, Madam Ashmita Kirkar, and his better half, United Patrikas President Sandesh Kirkar, co-apparel partner of TCL. To batters are out, to take the charge of batting is Bonaji Kalangudkar and Swapnil on the non-strikers end, on the bowling mark. Requesting over the captains to please kindly send your extra men here besides us. Just forgot to mention that. Jeet cricketers, your extra men, and McLaren, Tushar, please signal someone to please join us. Kedar Zambolikar from the Panjim Gymkhana end will be starting the bowling proceedings. To the batter, striking position. Bonaji Kalangudkar, not from Pune, but from Asnora. The superstar when it comes to the tennis cricket. He scored 71 plus in the semi-finals for the first eliminator. Are you ready? Let's play is the call. Ball is up and there's a fielder, just a hand to it. Oh, that would have been a very first ball catch. Good effort there from the fielder, just the ball was slightly uppish there on that occasion. Good effort. Well, everything is happening here. And the beautiful match, this is turning out to be absolutely down the wire. It is going to be one of the most sought after match of the TISWADI Cricket League. On this beautiful Kampal ground of TISWADI. Taluka. Kedar once again on the bowling mark.
Was slightly to the leg side in the wide call. Signal comes from Rajendra Davalkar. Maybe the wicketkeeper trying to target Swapnil, who's on the non-striker's end. They have to go a long way. They have to make sure every over. So in the meantime, yes, we have with us the former Indian captain, Ajay Jadeja. In the meantime, the moment I say Ajay Jadeja, the ball is gone up out of the park for a huge sixer. That is 6 runs. The former Indian captain, all-round performer. So Ajay Jadeja is here with us. The first over is on Kedar Zamaulikar right about the stumps, and a good sixer has been held by Punaji. Courtesy score moves to 9, first over in progress. Punaji is on the striking end. Kedar right about the stumps. Let's see what are his plans, as he has seen a strong batsman on the striker's end. Delivers a short pitch delivery. Ball has been pitched way above the head. That's why that wide has been signalled. Even one bouncer is the warning for the bat bowler. And that adds one more run in form of extra. Total moves to 10. Still first in progress. Another hit. Oh my dear. The proper connection, and definitely the ball has bounced out of the boundary. That's a even bigger sixer from Punaji Kalangutkar at the biggest part of the ground towards the mid wicket. No chance for any fielder as a power play over is on. 2 fielders are kept outside the 30-yard circle. That is a big hit, taking the total to 16. Still the power play over is on. Another hit. Ball bounces inside the boundary rope, jumps out of the line, and that's a boundary. With that boundary, score moves to 20. First over has so far considered 20 runs. Still 2 legal deliveries are yet to be bowled in this power play over. Short pitch delivery, again a beautiful pull shot. Wheels the ball towards the square leg area, and that is the 3rd sixer from the bat of Punaji. Punaji, the merciless batsman, not giving an inch for Kedar to settle down. First over, and still it continues. 26 on the board. Oh my dear. This is the reason why every team wants Punaji Kalangutkar in their side as far as tennis ball cricket is concerned. Most experienced player so far in the team, playing as outstation player, cuts the ball towards the point fielder, slightly finer for a single to regain the strike, as a power play over will be on after completion of 1. Score is 27 without any loss of wicket. Thank you, Sagar. So we have with us the former Indian captain and one of the best all-rounder in the 90s, Sir Ajay Jadeja. Was one of the best finishers that India produced in 90s. He was the unsung hero, and some of his cameo have been the difference between victory and defeat. And one such talk took place in 1996 World Cup quarterfinals in Bengaluru.
on March 9 was a day that left crowd in awe. What was the most interesting about that inning? Well, he made one of the fiercest pacer in the world look like a net bowler. The man was Waqar Yunis, and Ajay Jadeja slammed Waqar for 22 in one over that helped India make 287 for 8, and Pakistan only managed to make a 248 and lost the match. It was Ajay Jadeja's toyed with him like a club bowler. He smashed him all part of the ground and badly ruined the pacer's bowling figure. So that was his reputation then. I'm sure Ajay Jadeja will be still remembering that particular over when the Pakistanis were made look like the net bowlers. In the meantime, the toss won by McLaren team were on the ground and the captain decided to bowl first. And this is the final of the TISWADI Cricket League. And we just saw the legendary match of the TISWADI Cricket League, that is Punjab Legends, the best players of yesteryears and the Goa Legends played between them. The score is 33 runs. So best figure to open up, and when Punaji is there, it is possible. Just letting the ball go by tossing and wide signal. Look at the judgment, he's aware which ball to hit, which ball to play for singles and which ball to just leave. Punaji Kalangudkar, the big name, the superstar when it comes to the tennis cricket of Goa. Not from Pune, he's from Asnora. Right in the block hole. A defensive stroke play here from Punaji. The ball is up and catchable. Who will take this catch? Coversfield is getting underneath it. He's looking down. Oh, he's just left it. Leaving the catch of Punaji is like giving invitation to the troubles. Well, in the morning match also he lost. Sure. Meanwhile, on behalf of the organizers of TCL, we would like to request and welcome Rajesh Gaonkar, a well-wisher all the way from Kumbhalsway. Sir, please come and occupy your place at the dais. We welcome you, sir, Rajesh Gaonkar. In the meantime, Sandesh has taken the wicket of Swapnil, the first breakthrough here. Sandesh Thakur, one of the best pacers, and he's very unhappy with that catch drop. He's still going to the fielder and asking him, why did you take the catch? And that wicket was so very important in giving life to Punaji Kalangudkar. Punaji is like Sachin Tendulkar of Jeet cricketers. So the first breakthrough, however, will be a sign of relief here for the bowler Sandesh Thakur and the fielders. The batsman walking in at number 3, Nikhil Divjikar. So Nikhil against the striking position, bit of a change the fielding of the captain. So by Tushar Narvekar. A slight adjustment there. Here comes Sandy. Oh, perfect delivery. That is to bowl to the left-hander.
And look at this, Sandesh makes it look so easy. It is not easy for the bowler to maintain that perfect line for the left-hander, and then for the right-hander. What becomes the offside for the left-hander becomes the leg side for the right-handed batsman. That is a difficulty. But Sandesh Thakur makes it look so easy. No matter which handed the batter is, he will bowl the perfect line just outside the off stump. Coming down the track, want to take the ball on half volley, play straight down the ground, but missed it completely. Lucky the ball didn't miss the stumps. Missed the stumps. Otherwise, if the ball had to hit the stump, that would have been a second breakthrough here. However, with this dot ball, that marks the end of 2 overs. After the completion of 2 overs, score is 35 with the loss of 1 wicket. DJ. England in the World Cup 1999. It was just awesome. And in Coca-Cola Cup in the year 1999 in Sharjah, he bowled what a magnificent over. First ball, dot, then a wicket, then wide, wicket, 2 runs, dot, and last ball, again a wicket. So he took 3 wickets to knock England out of Coca-Cola Cup at Sharjah in 1999. In the meantime, once again, Punaj is going big. But they're stepping out, fielder. It is a 6, of course. Just gone for a 6. One leg was out of the rope, and when he fielded, was stopped the ball. So definitely it's a 6. A 6 are coming, and Punaji from there signal it's a 6. While he's signaling, he's putting the finger up towards the sky. That means out. Punaji, since he had a bat in the left hand, was signaling for the 6er. A 6er anyways from the bat of Punaji Kalangulkar. Once again, he's going hammer and tong. He's going for the big ones. Right in the block of well bowled. Good receiving delivery. This is a good length to be bowled by the bowler. Right in the block hole. The answer, the reply is MS Dhoni's helicopter shot. If any ball is bowling you right in the block hole, you have to come with a helicopter shot. There it is, a bit of a helicopter shot from Punaji Kalangulkar. Krishna Satpute finished that shot so good. Helicopter. Whenever his helicopter spins, the ball travels out of the park. A warm welcome to all the guests, and special invitee is former Indian captain, all-rounder performer, Ajay Jadeja. Way outside the off stump and a wide signal. It's a smile on the face of the bowler. Maybe he wasn't convinced the officials. It's a wide signal. Extra adding up to the total to take the score up to 42 runs. Good hit once again, the ball coming right out from the middle. The fielder becomes the spectator and the spectator becomes the fielder catching the ball. It's a 6th again.
get this wicket out. And of course, there was an opportunity. The very first delivery of Sandesh Thakur, the ball was up. And the fielders was drops the catch. So whenever there is a live for Punaji Kalangudkar who is standing on the non-strike end, he makes the most out of that opportunity. Then leaves the opponent to repent. Good looking shot. There is a fielder to cut it off. He does well. By the time throw comes in, 2 runs easy. Adding up to the total to take the score to 51 runs. Completion of 3 overs, it's 51 runs for the loss of 1 wicket. A very good evening to all the spectators tuning in Goa, India and entire globe. What a wonderful match it is turning out to be. It's turning out to be a blockbuster, absolutely, because each and every moment of the match has all the ingredients of a classic limited overs match. You name it, romance, tragedy, comedy, suspense and the climax, you can't ask anything more than this. Beginning of the 4th over, Sandesh Thakur once again on the bowling mark. Swing and a miss, a dot ball to begin with. And of course full marks to both the teams for putting a great show, but as of now, it will be the responsibility of the batters how to tackle the great bowling attack of Sandesh Thakur. Because the score is not bad at all. In 18 deliveries, they have scored 51 runs. Ball is up and enough bat on that. Absolutely plentiful of bat on that from Punaji Kalangudkar. That goes sailing. It's huge, high, humongous, colossal, mighty, gigantic, titanic and out of the park. Congratulations Punaji for your outstanding and swashbuckling 50. And what a way to finish and come to that cameo of 50 with a wonderful sixer. The best bowler of Goa to the best batsman. Oh, he's going reverse this time. Reverse sixer or reverse shot is invented by Kevin Peterson of England. A lot of shots been invented by the legendary players like the helicopter shot from MS Dhoni, scoop from Dilshan, bended scoop from AB de Villiers, uppercut Sachin Tendulkar. Full toss is not the delivery to bowl to Punaji Kalangudkar. Take that. Doesn't matter who's the bowler, what pace that he generates, what reputation the bowler has. Punaji will take right out of the park. Wonderful sixer. Now the mighty sixer, and this sixer will take the score to 69 runs. Sandesh Thakur. Played with a lot of respect. Realizing Sandesh Thakur, both have to go to wall point.
रनों की यात्रा का दायित्व निश्चित तौर पर इन बल्लेबाजों पर है और देखना होगा कि कितना टोटल रखने में सक्षम है ये बल्लेबाज। पुनाजी कलकोट के बल्ले से फिर से एक बार लाजवाब शॉट निकलते हुए उनके साथ निखिल दिवजीकर, जो कि सुनील नारायण हूबहू उन्हीं की तरह गेंदबाजी बल्लेबाजी। तो 5वीं ओवर की शुरुआत जो कि होने जा रही है, स्कोर हुआ है 70, विकेट गिरा है 1। टॉस जीता था मैकलैरन की टीम ने और उनके कप्तान ने फील्डिंग का निर्णय पहले दिया था। तो 5वीं ओवर की शुरुआत दूर वाले छोर से गेंदबाजी। रजत इसी गेंद पर फिर से एक बार जोरदार शॉट 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ स्कोर 76 रनों का। बिल्कुल हाफ वाली पर सीधे बल्ले से खेल दिया है, वहां पर कैच का मौका, कोशिश की मगर गेंद फिर से एक बार निकल गई खिलाड़ी के हाथों से। दूसरी कैच जो कि ड्रॉप की गई है पुनाजी कलंगुटकर की। जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है, लक फेवर्स द ब्रेव। तो बिल्कुल बहादुर बल्लेबाज पुनाजी कलंगुटकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फिर से एक बार रनों को बढ़ाने की प्रक्रिया में जुड़ गए हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर 77। हल्की सी तब्दीली आप देख सकते हैं, डीप गली की दिशा फील्डर को रखा गया है। निखिल दिवजीकर जो कि स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज। संतुष्ट नहीं है गेंदबाज, हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली करना चाह रहे हैं। अभी स्कोर 77 रनों पर 1 विकेट की सफलता अब तक मिली है। क्या ही बेहतरीन धुएंधार बल्लेबाजी होती है पुनाजी कलंगुटकर की। अपना अर्धशतक के पारी के बावजूद अभी भी जमे हुए, टिके हुए, डटे हुए। हाफ वॉली पर खेल गया इस बार पॉइंट की दिशा में। हल्की सी फंबल ने काम आसान किया बल्लेबाजों का। 1 रन था, 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए 2 रनों के साथ स्कोर 79 रनों पर जा पहुंचा है। बिल्कुल अब एक लंबे 6 रन के साथ फिर से एक बार पुनाजी कलंगुटकर स्ट्राइक पर। कप्तान कहाँ भी फील्डिंग लगा ले मगर पुनाजी कलंगुटकर निश्चित तौर पर गेंद को हवाई रुक देंगे। फिलहाल निखिल स्ट्राइक पर कदमों का इस्तेमाल किया, आगे को आकर हल्का सा हेलीकॉप्टर शॉट, शाहीन गेंद के साथ वाइड का इशारा। कैसे नाखुश गेंदबाज जिसे मान्यता प्राप्त दोनों ऑफिशियल अंपायर राजेंद्र दाभोलकर, जिन्होंने गोवा पुलिस के लिए काफ़ी क्रिकेट के लिए लेदर में खासतौर पर। अब जब क्रिकेट की बात आती है तो गोवा पुलिस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस कहा जाता है। गोवा के सरजमीं पर T20 के फॉर्मेट में सबसे घातक टीम। बट क्योंकि गेंद बाहर खेलना चाह रहे थे, फिर से एक बार हल्की सी शाही रन का मौका। बिल्कुल होता हुआ वाइड के साथ 1 रन, यानी कि 2 रन जो कि जुड़े स्कोर के खाते में। इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है। बयासी रनों पर सबसे सीनियर, सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल स्कोरर रमेश असगांवकर स्कोरिंग करते हुए बीच फिर से एक बार बड़ा शॉट के लिए आगे बढ़े पुनाजी कलंगुटकर। फिर से एक बार गेंद को मारा मैदान के बाहर। इस 6 रन के साथ स्कोर 88 रनों पर। एक बार बड़ा शॉट, फिर से एक बार नतीजा वही।
तो 94 रनों पर ये 6 रन के साथ और एक लंबा शॉट लगाते थे निश्चित तौर पर 100 रन पर जाएगी टीम। जीत क्रिकेटर्स जीत के जाना चाह रही है ट्रॉफी। ये ले लो बाहर मैदान के सबसे बेहतरीन शॉट, 100 रन पूरे होते हुए जीत क्रिकेटर्स के। और 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 100 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सामने से रोड से नया ओवर जो कि छठा ओवर वीरेंद्र गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस गेंद इस बार आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया, इस बार एकदम और बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। दर्शकों की काफी भारी संख्या में तादाद, आप सभी का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से 104 रन टोटल। से राउंडेड इस बार अच्छी गेंद सम्मानजनक खेला और जब तक मिडऑफ पर गेंद को आते उठाते फील्डर फील्ड करते 1 रन स्कोर के खाते में और जुड़ता हुआ और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 105 रन पर एक मजबूत स्थिति में मैदान पर दिखाई देती हुई। जहां तक अगर रनों की बात की जाए, जीत क्रिकेट टीम टॉस जीता, मैकलन क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का और सामने बल्लेबाजी को और पुनः जी कलंगुटकर बिल्कुल आज के दिन की अगर बात की जाए तो छा गए मैदान पर। इस आड़े बल्ले से खेला इस बार और देखना होगा जब तक मिडिल विकेट बाउंड्री पर फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में और जब तक गेंद को उठाते फील्डिंग करते 2 रन इसी बीच में स्कोर के खाते में। मान्यवर कक्ष में सभी सम्मानीय अतिथि और उन्हीं के साथ सर अजय जडेजा जो विराजमान हो चुके हैं, आप सभी का स्वागत। तिसवाड़ी क्रिकेट लीग आज का तीसरा और आखिरी दिन और अंतिम मुकाबला इन 2 टीमों के बीच में। शानदार ट्रॉफी आपके सामने दिखाई देती हुई स्टॉट में मिली बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच गेंद निकलते हुए लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। छठे ओवर का गुटकर सामने स्ट्राइक पर और इस बार बाहरी किनारा लगा के हवा में निकले, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और इसी के साथ बड़ी सफलता, लेकिन बहुत देर हो गई मैदान पर। एक शानदार इनिंग पुनः जी कलंगुटकर की 97 रनों पर आउट हो गए खुद के व्यक्तिगत 3 रन लगभग अब जो कि अपने शतक से वंचित हो गए। 2 साल पहले संजीवनी शुगर फैक्ट्री के बिल्कुल जो कि एक बड़ी प्रतियोगिता रही थी उस गांव में, वहीं पर 29 गेंदों में 100 रन पुनः जी कलंगुटकर का एक शानदार जो कि शतक। आज लगभग काफी निराशा हो गई होगी मन में, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते क्रिकेट के मैदान पर। 97 रनों पर, लेकिन तालियां तो जरूर गूंजेगी पुनः जी के बल्लेबाजी के लिए।
सचिन बंगारी। सफलता मिली लेकिन एक बड़ी साझेदारी मिली दूसरे विकेट के बीच में, बहुत ही बड़ी कीमती साझेदारी बनती हुई मैदान पर, और वही साझेदारी ने बिल्कुल मजबूत कर दिया इस लोग। इस बार आते आते कड़ा प्रहार, क्रैकिंग शॉट, लॉन्ग रन बाउंड्री पर हवाई फायर और गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के। वन लाइन 119 रन टोटल स्कोर। आखिरी ओवर का 7वें ओवर का अंतिम ओवर का खेल, बाकी बड़े टोटल का मुकाबला। लेकिन जिस तरह से विकेट बनाया है पिच क्यूरेटर ने, बहुत ही अच्छा विकेट है। एक बैटिंग पिच है, आउटफील्ड काफी तेज है और क्रिकेट के मैदान पर पहले भागित करना काफी गलत बात हमेशा होती है। बाउंस भी बहुत अच्छा मिल रहा है जो कि विकेट पर, और मैदान पर भी कई बार जो कि फील्डर भी धोखा जो कि कई बार खा चुके हैं, जो कि फील्डिंग करते हुए कई बार गेंद जो कि सर के ऊपर से निकले। तो फिलहाल अंतिम ओवर का खेल बाकी, सामने पंजी जिमखाना की ओर से रिवर एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आते हुए आखिरी ओवर में तुषार नार्वेकर जो कि टीम के कप्तान है, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, और इनकी बल्लेबाजी काफी अहम रहेगी। बल्लेबाजी में इनको रुकना पड़ेगा, एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी क्योंकि लंबा सफर है, टारगेट बड़ा है मैच को जीतने के लिए। 7वें ओवर की शुरुआत होती हुई फील्डिंग में कोई खास परिवर्तन नहीं, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर, एक थर्ड मैन पर जो कि ऑन साइड पर लेफ्ट हैंडर के लिए मिड विकेट, और एक लॉन्ग ऑन। फिर टॉस गेंद, इस बार ड्राइव किया गेंद को ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 1 रन के लिए निकले, क्या दूसरा बनेगा? दूसरे के लिए निकले। आज फील्डिंग बिल्कुल जो कि मैकलर क्रिकेट टीम की अच्छी नहीं रही मैदान पर। 3 कैच, उसी के साथ 1-2 मिस फील्डिंग, 1-2 रनआउट के मौके, ये बातें बिल्कुल मैदान पर देखने को मिली। और इसी बीच और 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। नॉन स्ट्राइकर पर सचिन बंगारी आगे निकले, इस बार गेंद को स्वीप किया ऑन साइड पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, और एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। रन टोटल, 7वां ओवर, आखिरी ओवर पहले इनिंग का। जीत क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई आगे निकलकर इस बार फुल टॉस, मिड विकेट पर गेंद, और फिर से एक बार निकलकर बड़ा शॉट, डीप मिड विकेट बाहर, सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। स्ट्राइक पर सामना करते हुए इस बार अगली गेंद का तुषार नार्वेकर, राउंड विकेट, इस बार आगे आकर हाथ वाली पर लिया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद को खेला और गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ, और एक बड़ा शॉट बल्लेबाजी में 4 रन जुड़ते हुए टीम के पर। पहला जो पुनाजी का कैच छूटा, वैसे बिल्कुल मुड़कर नहीं देखा पुनाजी, कलंक उठ करने, और जीत क्रिकेट टीम ने छोटी गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल करना चाहते थे, लेकिन होगा गेंद बल्ले से लगी और विकेट कीपर ने गेंद को कैच को पकड़ा, तो सफलता मिली इस ओवर में। अंतिम
से कप्तान अब खुद मैदान पर आनंद दिवसीकर सामना करते हुए सामने मैक्लेरन क्रिकेट टीम के कप्तान गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में जीत क्रिकेट टीम के कप्तान। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की गेंद, हल्की सी गेंद को खेला सिली मैदान की तरफ, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए निकले, थ्रो पहुंचा और इसी के साथ अंपायर की उंगली आसमान की ओर, आनंद दिवसीकर सिर्फ एक रन बनाकर रन आउट हो और इसी के साथ टोटल जो कि स्कोर रुका हुआ मैदान पर 100। सुबह के मैच में भी एक बड़ी इनिंग और इस मैच में भी शानदार बल्लेबाजी, 3 रन पीछे हो गए। काफी जिसकी तरफ से निराशा होगी मन में, क्योंकि बिल्कुल सेंचुरी बनाने का मौका था इस मैच में, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डिंग खराब हुई मैदान पर। मैक्लेरन क्रिकेट टीम के शुरू में कैच छूटा, उसके बाद 2 मौके गंवा दिए, रनआउट का एक आधा मौका और उसी के साथ मिस फील्डिंग और बड़े टोटल का सामना करना पड़ेगा मैक्लेरन क्रिकेट टीम को। बल्लेबाजी है खास करके कप्तान जो कि पूरे फॉर्म में बहुत अच्छी बल्लेबाजी इस खिलाड़ी में की, तुषार नार्वेकर ने, उनको एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। लेकिन शुरू से टारगेट जो कि सामने रखा है, बड़ा टोटल रखा है, तो रन रेट के साथ में बड़े बड़े लंबे लंबे शॉट लगाने पड़ेंगे बल्लेबाजी में। 138 रन 139 का टारगेट मैच को जीतने के लिए। छोटा सा ब्रेक जुड़ जाते हैं डीजे के साथ जब तक दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी। प्यार के साथ भाऊ कहते हैं हमारे साउंड मास्टर हमारे साथ जो कि जुड़ चुके हैं संकेश, और संकेश के साथ सारंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 3 अंपायर इस टूर्नामेंट के साथ अभिजीत तड़ेकर, राजेंद्र दाभोलकर उर्फ राजू, और वामन मयकर, सागर गोस्वामी, नदी अहमद और मैं अशोक नाइक, आप सभी के साथ एक बार तिसवाड़ी क्रिकेट लीग 2022 अंतिम मुकाबला। उपस्थित सभी मान्यवर, सम्मानीय अतिथि और सभी दर्शक, आपका स्वागत। कमेंट्री बॉक्स में से 139 का टारगेट है, लंबा सफर है, लेकिन जब से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में सागर मुकाबला रहा था 434 का, तब से बिल्कुल मैंने बात तो बंद कर दी जो कि कौन जीतेगा। बड़ा टोटल जब होता है तो काफी कांटे का संघर्ष होता है और देखना होगा क्या मुकाबला वैसे ही देखने को मिलता है। तो खेल की शुरुआत अंपायर का इशारा, पहला ओवर पावर प्ले का, आनंद दिवसीकर खुद कप्तान मोर्चे पर और सामने ओपनिंग बल्लेबाजी में कप्तान स्ट्राइकर पर तुषार नार्वेकर, और तुषार नार्वेकर के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर हितेश, ये जोड़ी मैदान पर लेफ्टी और राइट कॉम्बिनेशन मैदान पर। पहली गेंद अपटम पर शॉट ऑफ लेग गिरा, अपटम से बाहर, इस बार वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन स्कोर के खाते में इसी के साथ स्कोरिंग को शुरू किया मैक्लेरन क्रिकेट टीम ने। 1 रन जो कि पहला ओवर जारी, आनंद दिवसीकर रोड एंड से गेंदबाजी करते हुए और सामने बल्लेबाजी करते हुए तुषार नार्वेकर। और
और इस बार शॉट ऑफ का शॉट, गेंद हवा में खड़ी हो गई, मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ बड़ी मछली जाल में बहुत ही बड़ा धक्का। मैकलर क्रिकेट टीम को तुषार नार्वेकर आउट होकर वापस बिना खाता खोले 0 पर। बहुत ही अच्छी सफलता आनंद उल्फीकर को। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, थोड़ी सी ऊपर लगी और मिड विकेट पर एक सुंदर कैच। 2 फील्डर थे बाहर, जो एक डीप लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट, और मिड विकेट के फील्डर ने कैच को जो कि लपक लिया। यही फर्क हो गया इस मैच में, जो कैच छूटे वो महंगे साबित हुए और ये कैच जो पकड़ा गया वही पर तुषार नार्वेकर जो कि कप्तान चलता किया पहले विकेट के रूप में 1 रन 1 विकेट पर, और नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर रजत। और इस बार स्लिप के बड़ी खूबसूरती के साथ देखने होगा बैकवर्ड स्कोर लेग पर 2 फील्डर क्या लंबी दौड़ लगाई, बहुत ही शानदार फील्डिंग। कैचेस विन मैचेस, ले लो कैचेस, जीतो मैचेस, पकड़ो। यही बात होती है मैदान पर, आपकी फील्डिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए। देखिए किस तरह से कैच को पकड़ा मैदान पर, बहुत ही बेहतरीन कैच। जब ऐसे कैचे पकड़े जाते हैं मैदान पर तो दोस्तों बस वो याद ताज़ी होते हैं जो 25 जून 1983 को जो कि सर विवियन रिचर्ड्स का कैच जो कि पकड़ा था, सर कपिल देव निक्कस ने क्या कैच पकड़ा था। वहीं पर भारत ने जो कि पहली बार वर्ल्ड कप को जीता था, लेकिन वो फील्डिंग को तो बिल्कुल आज भी सभी दर्शक, सभी क्रिकेट प्रेमी जरूर याद करते हैं। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, लेकिन लड़खड़ाती पारी मैदान पर एक संकट में दिखाई देते हुए संकट मोचक बनना पड़ेगा। इस जो कि संकट से बाहर निकलने के लिए बड़े आक्रामक बल्लेबाजी के साथ साझेदारी भी बनाने पड़ेंगे। और मैदान पर आते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज केदार जांबवलीकर। अपने बॉलिंग मार्ग पर आनंद उल्फीकर और हैट्रिक, अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार बढ़िया शॉट, बल्ले के बीच और बीच, टाइमिंग लाजवाब, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। क्योंकि मुश्किल नहीं है, जिस तरह से विकेट है, गेंद है सिक्सर की, तो मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आपके लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा मैदान पर इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि सफर लंबा है, टारगेट मंजिल बहुत दूर की है। और ये बल्लेबाज 2 बल्लेबाज है मैदान पर। छोटी गेंद इस बार पुल किया बड़ी खूबसूरती के साथ मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद थोड़ी सी हवा में, और देखना होगा मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। 2 विकेट बहुत जल्द खो दिया है। पावर प्ले का पहला ओवर और पहले ओवर में 2 कीमती सफलता हासिल करते हुए कप्तान जीत क्रिकेट टीम के आनंद उल्फीकर और एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड विकेट। छोटी गेंद और इस बार लाजवाब टाइमिंग, स्क्वायर बाउंड्री पर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद आती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए।
टोटल हो चुका है 15 रन 2 विकेट। 15 रन 2 विकेट पर 139 का टारगेट, 7 ओवर का मुकाबला। बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन पहले विकेट ओवर में 2 विकेट खोए तो थोड़ा सा दबाव बढ़ गया बल्लेबाजी पर, वहीं से बाहर निकलना पड़ेगा, आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और देखना होगा अगली गेंद, अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला, सामने अपने पालोत्र में गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। तो पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ। 139 रन का जवाब मैदान पर मैक्लरन क्रिकेट देते हुए सामने से दूर वाले छोर से रिवर एंड से सचिन बंगारी दिखाई देते हुए बॉलिंग मार्ग पर, सामने केदार जांबवलेकर, लॉर्ड सेकंड पर रजत, दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान पर फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे कप्तान विकेट कीपर आनंद यूजीकर। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और 15 रन 2 विकेट पर सचिन बंगारी अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म राउंड विकेट, सामने केदार जांबवलेकर। इस बार बढ़िया शॉट, अपने पालोत्र में गेंद को जरूर, जो कि गेंद की रफ्तार को कम कर दिया सचिन बंगारी ने। और जब तक मिडल पर फील्डर गेंद को साथ दे रहे थे, फील्ड करते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक बार फिर से स्ट्राइक गेंद पर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार आड़े बल्ले से खेला, पहले बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन और मिल गया स्कोर के खाते में। 16 पर पहुंचा इस सिंगल के साथ। 2 विकेट अब तक हो चुके। 139 का टारगेट। तिसवाड़ी क्रिकेट लीग 2022 एक बहुत ही बड़ा आयोजन इस टूर्नामेंट का। पूरी सारी मेहनत जो कि तिसवाड़ी के सभी मेंबरों को दाद देनी पड़ेगी इस प्रतियोगिता के लिए, और वो पल वो जो कि वक्त जो फाइनल का मुकाबला, अंतिम मुकाबला मैदान पर। सामने रजत, सचिन बंगारी एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, बड़ा शॉट, ओवर पिच गेंद मिले, बल्ले के बीचों बीच एक तगड़ा शॉट, लॉन्ग रन बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। पड़ेंगे तो मैच बिल्कुल बनेगा, मैच नजदीक आ जाएगा। सचिन बंगारी एक बार फिर से सामने बल्लेबाजी करते हुए रजत, और एक बार फिर से बहुत ही अच्छा शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। दो बड़े शॉट, एक 6 रन के लिए, दूसरा चौका लगा बल्लेबाजी में, और रन गति को भी बढ़ाया, जो कि इस 2 बड़े शॉट के साथ वो भी बात मायने रखेंगे मैदान पर, क्योंकि 139 का टारगेट है तो आपको हर ओवर में रन बनाने पड़ेंगे, रन रेट पर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, और वही बात मैदान पर दिखाई देती हुई। इस बार बाहरी किनारा गेंद हवा में निकली, लेकिन जब तक गली पर गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। बाहरी किनारा लगा था, इस बार बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, और जब तक गली पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन और स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ। केदार जांबवलेकर स्ट्राइक गेंद पर, सचिन बंगारी एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, लंबे कद के खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बड़े शॉट के साथ गेंदबाजी में जाने जाते हैं, विकेट पर बिल्कुल स्टंप्स को चिपके हुए।
फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है मैदान पर। इस बार खेला इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, फिर से थोड़ी सी हवा में गेंद, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन देखना होगा। बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग इस बार। और जब तक थ्रो करते तब तक अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से रन बचाए। यह फर्क दिखाई दिया मैदान पर, जो पहले इनिंग को देखा मैक्लेरन क्रिकेट टीम को, कहीं ना कहीं फील्डिंग जो कि वो नहीं हुई जो होनी चाहिए थी फाइनल के मुकाबले। फिर 2 रन मिले स्कोर में, और इसी के साथ 1 रन माफ कीजिए, तो टोटल खेल समाप्त होता हुआ इसी के साथ दो ओवर का खेल जो कि और टोटल हो चुका है। टोटल स्कोर बोर्ड पर 28 रन। केदार जांबोलीकर और उन्हीं के साथ रजत, 2 बल्लेबाज मैदान पर। गेंदबाजी पर एक बार फिर से दिखाई देते हुए खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर लेकर फील्डिंग को ठीक ठाक करते हुए, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है मैदान पर। बिल्कुल हमारे मान्यवर कक्ष के सामने मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप स्क्वायर लेग ऑन साइड पर आनंद यूजीकर, खुद का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद के लाइन से थोड़ा सा चकमा खा गई। इस बार टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही और विकेट कीपर के पीछे शॉट पाइन लेग, और एक शॉट टर्न में 2 फील्डर है अगल बगल में, वहीं पर गेंद फील्ड होते हुए वापस एक बार गेंदबाज आनंद यूजीकर के हाथों में। राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर के लिए, एक छोटा रन ऑफ 7-8 कदमों का अपने बॉलिंग बार पर कलाई का उपयोग किया, मोड़ा इस बार गेंद को ऑन साइड पर फाइन लेग की तरफ, और जब तक तो गेंद को फील्ड करते फिर से 1 रन। इस मैच में सिंगल डबल से ज्यादा बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 139 का टारगेट है, और उस टारगेट को अगर पार करना है तो सिंगल डबल से 7 बड़े बड़े शॉट हर ओवर में आपको लगाने पड़ेंगे। सामने रजत आपको स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए, सामना करते हुए, इस बार शॉट ऑफ लेग गेंद, फिर से चूके थोड़ा सा गेंद के लाइन से, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कप्तानी के साथ, बल्लेबाजी के साथ जो कि गेंदबाजी। एक बार फिर से अगली गेंद, राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार बड़ा शॉट देखने होगा, बल्ले के बीचों बीच डीप लॉन्ग बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए सीमारेखा से बाहर, 6 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन पर, 37 टोटल स्कोर। बहुत ही बढ़िया शॉट। पहला रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए निकले, और बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। दोस्तों ये रनिंग बिटवीन द देखकर बिल्कुल वो जमाना याद आ गया जब अजय जाडेजा और उनके साथ रॉबिन सिंह, ये 2 खिलाड़ी विकेटों के बीच में दौड़ते थे। आजकल महेंद्र सिंह धोनी की हम चर्चा करते, विराट कोहली, क्या विकेटों के बीच में, लेकिन वो दोस्तों जमाना था। ये 2 खिलाड़ी बहुत ही माहिर थे विकेटों के बीच दौड़ लगाने में। आनंद यूजीकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर, एक बहुत ही अच्छा मुकाबला दोनों के बीच में। खेल जारी तीसरे ओवर का, 139 का टारगेट मैच को जीतने के लिए।
बढ़िया शॉट, एक कॉपी बुक स्टाइल क्रिकेट मैदान पर लेदर क्रिकेट का शॉट ऑन ड्राइव का, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, सिंगल बना दिया और इस सिंगल के साथ खेल रुका हुआ मैदान पर जो कि टारगेट 139 का 97 रनों की शानदार बल्लेबाजी पुनाजी कलंगुट करके और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन स्कोर बोर्ड पर जो कि 2 विकेट के नुकसान पर बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी मैदान पर बल्लेबाजों को संघर्ष मैच को जीतने के लिए और बिल्कुल इसीलिए जो कि हम अक्सर कहते हैं मैदान पर जो कि जो गेंदबाजी में परिवर्तन मैदान पर और कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल मीठी आवाज के साथ जुड़ जाते हैं। आइए माइक्रोफोन पर बदला होता हुआ सागर गोसावी आगे का हाल सुनाते हुए। आइए सागर, आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत इस कमेंट्री बॉक्स में इस फाइनल के अंतिम मुकाबले में। Thank you, Ashok Ji Naik sir. Now we are into the final juncture of the match. So far, the 3 overs have been bowled in these run chase. Total, while chasing the target of 139 runs, McLaren are 40 for the loss of 2 wickets. Punaji, the next bowler, bowling the fifth, and what a strike! Full shot in the air. Sachin under the ball, tall guy, the tallest guy in the on the field at the moment, could not stop the ball from crossing the fence, and that's a maximum. A sixer to be added, 6 runs to be added into the account of McLaren, taking the total to 46. There was a early fall of wicket in the very first over, the power play over, but still the good batting continued by the incoming batsmen. Both the left-handed batsmen are out in the middle. Rajat on the striking end, the main architect of the run chase so far. Change in pace, middle ball taking the leading edge, travels towards the third man, well fielded, quick onto his feet, gathers the ball quickly, throws it back to the keeper. Meanwhile, a dot ball bowled by Punaji. Punaji was the architect in the first innings, scored 97 of his individual score. Courtesy, the team score was 138 at the end of the 7 overs. And there were some little contributions by other players also, but the main architect is Punaji Kalangutkar. Now let's concentrate on the run chase. Low full shot, chance of catch. Oh my dear, what a lovely catch. He can time effort, and such is the effort that are required when you're playing the big finals. You can't afford to give half chances. This is a better fielding. Third wicket goes down. TCL. Playing the tracks as per the situation, and this track definitely was for Pratik for that wonderful catch. Dil pe mera zoor nahi. As soon as he senses there's a chance of a catch, Taib has given his heart and soul to pick that catch. Couple of inches above the ground, and what a wonderful catch where fitness, same catches. We can say that it was an international quality catch. Meanwhile, let's continue as the new man that joins out in the middle is Sandesh Shakur with the willow in his hand. Another left-handed good all-rounder, have played at the national levels as far as tennis ball cricket is concerned. Plays for Goa Police, and whenever Team Goa is going to participate out of the Goa, then definitely this all-rounder is the first pick in the team. Sandesh Shakur on the striking end. And
Ashok Naik has just updated me that he is the specialist of this super over. A shrewd bowler and a very good batsman, a shrewd all-rounder, I must say. Meanwhile, Punaji creates one more chance, but the ball drops away from the fielders. Ball drops in the no man's land. And a single to move the total to 47. Fourth over in progress. Punaji, as cool as cucumber, aiming and planning where to deliver the deliveries. Knows that he can't afford to give the loose deliveries. Meanwhile, Kedar is on the striking end. What a lovely strike, oh my dear. Moves onto the back foot, shifts his balance on the back leg. And a wonderful strike to guide the ball over the square leg boundary. That's a biggie. And a DJ should play a music. So Kedar finally joining the crew. Another wonderful strike straight along the ground. A proper cricketing shot, we must say. A single to finish the fourth over. After completion of 4, score is 54 for the loss of 3 wickets. That catch will be in the minds of the players of the fielding as well as the batting side, as a chance was given to Punaji and he has scored 97 runs. Meanwhile, let's see what is the equation. 3 overs are remaining. Swapnil has been handed over the responsibility to deliver for the fielding side by the captain Anand Divjigar. Now the equation is 18 legal deliveries to bowl and 85 runs to get. Target at this juncture looks to be little impossible, but nothing is impossible in the game of cricket. Switch it attempted, no proper correction. Meanwhile, a fumble from the keeper allows Sandesh, gives him liberty to take a single in the form of the byes. And well, another good delivery bowled by Swapnil. And the special invitee is also witnessing the match. Meanwhile, let's see what is going to happen. Swapnil to continue. And another swing of the bat, misses, ball received very well by the keeper, right slightly outside the off stump, right into his hands. So meanwhile, Swapnil to continue, and plot is looking very difficult for the batting side at this moment. Meanwhile, there's a sweet correction, fielder under the ball, the big guy. Sachin Bangari receives the ball with love, and 4th wicket.
Batsmen have come at the striker end. We can see a lot many fielders moving to gain their positions at the right areas. As the fielder from the off has been moved inside the circle and more fielders have been active onto the boundary line towards the leg side. Meanwhile, Swapnil to continue. Let's see whether Sankesh can get a biggie. Change in pace, but outside the off stump. Wide is the signal from the umpire. 1 run in form of extras added to the total score, moves to 56. Let's see whether Sankesh can hit a sixer in this over to spoil the equation. Swing of the bat, but a very good line and length maintained as per the guidance of the captain, who is keeping the stumps. Telling on the numerous occasions to his bowlers at which are the right areas to deliver. We can see him right from the commentary box. Another good delivery, chance of a stumping. We have to wait for by signal. Meanwhile, Sankesh is rightly back inside the crease. Jeet concludes over number 5. Score is 56 for the loss of 4 wickets. More 83 runs to win from 12 legal deliveries. Even 12 sixes can make it possible. So let's see which batsman is going to be the Bahubali for McLaren. Or Pratik can restrict the batsman from scoring those runs. Meanwhile, a wonderful strike from Kedar. Shifts out to the back foot and the hit. That's a biggie. Pratik 'Strike'. There is a better connection. Fielder watching the ball, but only to see the ball sailing over his head. Second sixer from the bat. .71 runs required. Still, the spectators knows anything and everything is possible in the game of cricket. Kedar trying to write his name in the books of this TCL tournament. Switch hit and no connection whatsoever. Allows the ball to travel to the keeper. Meanwhile, well stopped by Anand Divjikar. Taking it on his back, but a dot ball is the result. Meanwhile, Pratik looking little confident. Another swing of the bat. There's a fielder in place. 4 bounces in front of him. Another ball takes the ball out of the boundary rope. That's a boundary. That boundary taking the total to 72. And meanwhile, I would like to welcome Tushar Naik, who has just joined to enjoy the match. That's what he has signaled me, as only 1 over is left. But he has given his services in the previous half of the tournament. Meanwhile, another strike looks to be from the sweetest spot. No need even to look at the ball, and that's the biggie. That's the sixer number 4 in the over. That sixer takes the total to 78. I beg pardon, there's a 1 boundary and 3 sixes. Still, nonetheless, score is 78. Another strike. Sachin under the ball, but the result is going to be the same. And I have said 4-6, and this is the 4th 6 that have come. A 6-2 and
the 6th over. After completion of 6, score is 84 for the loss of 4 wickets. TJ. And the required runs are 55. Let's see whether Sankesh can groove the tune in with Kedar. Came down the track and that's an easy stopping chance for Anand Divjigar. Sankesh sacrifices his wicket. Let's see who is going to be the next batsman. So now I think the plan from the batting side will be just to minimize the gap between the target and the runs that they are going to score, and a couple of good hitting from here on can make that player remarkable in the upcoming tournaments, as many people are viewing this match live on YouTube courtesy TennisCricket.in. New Marine is Pranay will be taking the guard at the striking end. Pranay checking the fielders where they are placed outside the 30-yard circle. Accordingly planning, let's see whether Pranay can take at least 2 sixes out of this over to just boost his confidence. And that is the first strike. Sachin running hard. Meanwhile, fielder from the cover, Punaji, makes it look very easy as he catches the ball. Pranay comes and goes back to the pavilion without it even troubling the scorer. Meanwhile, the second wicket for Swapnil in this final over. Now Kedar has regained the strike. Let's see whether Kedar can continue with the same hitting that he has left in the second last over. Yogesh is the incoming batsman and Swapnil is on hat-trick. Let's see whether Swapnil can take hat-trick in the final over of the match, or Kedar will continue with the blasting innings that he has played so far. Match already into the kitty of Jeet cricketers, but still Kedar can write his name in the history books, as after the commencement of this tournament it is going to be recorded into the book of the history of TCL. Meanwhile, low full toss. Hat-trick has been missed and a single to rotate the strike. Kedar takes the single to take the position at the non-striker set. With the single, score moves to 85 and Yogesh is on the striking. A change in pace is doing the trick for Swapnil. Meanwhile, a wide is the signal from the umpire. Ball has been pitched way outside the off stump. That wide takes the total to 86. Another good delivery. No answer from the bat of Yogesh. And now the final, I beg your pardon, 2 deliveries.